Hello everyone. Now again we are here for our next class beta. I hope you are fine and you are watching our video for our next class then work. Okay, we have discussed beta first topic of our next unit work energy and power yesterday. Here work, what is work, how we can explain their work. Work is done when we are applying there some force, and due to this external force then some displacement is take place on that object. We will call it work is done by that object. Okay, this one discussed already. And how we can find this one? Force is a scalar quantity that is dot product of force and displacement. F dot ds we can write there small change in the work done. Okay, so now we are starting their next topic, type of the work. Our this one here type of the work, we are dividing this one work done into three type: positive work done, negative work done, and zero work done. Positive work done, when work is done is said to be positive, body is displaced in the direction of the force. Clear? Then we know about this one better. Then dw is equal to here force, small change in the force. We can write there F dot ds. Okay, small change in the displacement dot product. As we remove this one dot, then here we can write there f ds cos theta. In vector we have done a bit, if two vectors having dot product between them, then we can write there a b cos theta. So here f dot ds f d cos theta we can write there. Then theta is the angle between force and displacement. So this one angle will decide that work is done here positive, negative or zero. So if this one will be, body will be displaced in the same direction of the force. Now same direction of force means if theta equal to here zero, same direction we can say there. अगर body अगर ये है आपकी, then it is moving force we are applying there and displacement also acting in this direction, then theta we can write equal to zero only. Okay, theta will be zero, same direction will be there, then work done will be equal to here zero, positive work done. So we can write there work done dw equal to f ds cos 0. Okay, and cos 0 we know about this one, cos 0 will be equal to here 1 only. So here will be your positive f ds. Here, so positive work done will be there when your theta will be equal to 0. Then on this one condition we can say work done will be equal to our positive. Next here negative work done, work is said to be negative if force and displacement are in the opposite direction. अगर एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स इधर लग रहा है बट वो मुंह इधर कर दिए. क्लियर? फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन. फ्रिक्शन कहाँ लगता है बेटा? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. अपोज करता है मोशन का. इफ फ्रिक्शन विल बी मोर देन फोर्स, देन वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ओके, सो इन दैट केस इफ थीटा विल बी इक्वल टू आवर 180 डिग्री. अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? थीटा क्या बन गया? 180 डिग्री बन गया. सो आवर वर्क डन इक्वल टू एफ डी एस cos 180, and we know about this one, cos 180 will give us -1 value. Okay, so in that case we can write there minus f ds. So work done will be our negative. What? Negative work done will be there. If force and displacement both are acting in opposite direction, then theta we can write there 180, and in that case work done will be negative. Next here type of the zero work done beta. Work done will be zero when force and displacement are perpendicular to each other. क्लियर? तो इसके अंदर तो वर्क होगा ही नहीं. अगर आपने ये ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट लिया है, इसके ऊपर हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, क्या डिस्प्लेसमेंट इधर होगी? Force we are applying in upward direction on any block, can it will be move in that direction? No, there will be no displacement as we are applying perpendicular to the displacement. So work done will be zero in that case. So if we can write there theta equal to here 90 degree, then here we can minus cos 90 degree. Theta becomes here 90 degree, so we can write there f ds
cos 90, and cos 90 we know about this one, it will give us value 0. So work done will be come out equal to 0. तो जीरो वर्क डन कब रहेगा, जब आपका क्या रहेगा, थीटा 90 डिग्री रहेगा और थीटा 180 रहेगा, देन हियर वी विल राइट देयर वर्क डन विल बी नेगेटिव एंड थीटा विल बी इक्वल टू 0, then it will give us positive work done. So these are the three type of the work done which are acting when body will be displaced by applied their force. Okay. So when a body falling freely under the gravity, then work done by the gravity is the positive or negative. ये कह रहा है कि अगर बॉडी क्या फ्रीली फॉल हो रही है, देन फोर्स बाय द ग्रेविटी, फोर्स ग्रेविटी कितना फोर्स लगाएगी, तो वो वर्क डन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी. ओके, एनी बॉडी इज कमिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रही है ऑब्जेक्ट की, ये अगर ये ऑब्जेक्ट है बेटा, तो ये क्या कर रहा है, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी का क्या मतलब है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू दैट बॉडी इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉडी कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ ही जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है. Body acting downward only, force is acting downward direction, displacement also acting in downward direction, force and displacement both are acting in same direction. So we know about this one, work done equal to F ds cos theta. अगर आपका फोर्स नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रही है सेम डायरेक्शन में, सो हियर थीटा वी कैन राइट देयर इक्वल टू हियर 0. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू हियर पॉजिटिव ओनली. ओके, कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव और 0. सो हियर इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हैज द कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ये कह रहा है जिस डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी positive. So hence when a body falling freely under the influence of the gravity, then work done by the gravity will be positive only. I hope you understood beta how you can find this one. Clear? Now see we are one question here beta, your force, this one vector form given, again I am writing if not visible, then F equal to I cap plus 3j cap plus your 3k cap. This one 2 Newton. Here plus 2 G cap. This one Newton. You get I, J, K are the unit vectors along X, Y, Z in the system respectively. Then what is the work done by this force in moving a body at a distance of 4 meter along the Z axis? तो Z के रंग बॉडी का मूव कर रही है, डिस्टेंस हियर S is acting along your Z axis, means here we can write there 4k cap. Then force is our quantity given in vector form, displacement also given in the form of the vector. अगर direction given होगी then we will write in vector form, if direction is not there then we will call it scalar quantity. तो यहाँ पे given है बेटा distance 4 मीटर travel कर रही है Z direction के लिए, तो Z के लिए हम क्या यूज करेंगे, k cap. So force and displacement given, so work done how we can find there, in vector form we know that work done equal to F dot S. Yes na, if angle will be given then remove this dot sign, then here we can write there cos theta, but here vector given, that's why we will write there Fs. F is given here minus I cap plus 2j cap plus here 3k cap dot S. S is given in our question, that is here 4k cap. So here we can write there, solve this one dot product, we know that I dot I 1, J dot J 1, K dot K, and remaining opposites unit vector will give us 0 only. I dot K J 0, I dot K 0, K dot I again 0. So here this one, here K only, so these terms will give us 0 only. Here left this dot this 3k dot 4k cap dot. So dot here will be 14, k dot k 1 only. So work done will become equal to 12 joule. Units are given in your that is SI unit only 4 meter, and here this one Newton. So this one here joule only will be SI unit. Otherwise you can write there another unit Newton meter. This also unit of the work done. So if vector form here force displacement given, then we can find by using here dot product. Okay.
Now next year, force distance graph to find their work done. Okay, if your graphical form given of the force and distance, then how we can find their work done? So here we discussed about their work done beta FFDS. Clear? For the maximum, then we can write their work done equal to FDS. So if your graph is given force displacement, your force displacement graph is given, so how you can find their work done? By using their graph. This one is our origin. Now any curve we are drawing here in this graph. Okay, in sorry, in FS graph, draw. Here let we are taking curve name AB. AB curve. Okay, any curve we are drawing there in your FS graph, then by using definition of this one, force definition is equal to force into displacement. So by using this one, by using definition of work done in graph, बेटा we have done there two term. One is your slope. I told you ग्राफ के अंदर कर्व का कोई भी मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करते, then one you can use their slope and second we can use their area under the curve. Okay, slope कैसे फाइंड करते हैं? रेशियो ऑफ दिस वन टर्म बाय दिस वन. क्लियर? अगर आप स्लोप फाइंड करें इस ग्राफ के अंदर, तो स्लोप हमें क्या देगा? Change along y axis to the change along x axis. So here we can write there f2 minus f1, then s2 minus s1. Ratio along y axis to the change in the x axis. अगर हम ये लिखते हैं, then can you write there this one equal to work done? Force by displacement we can write their work done. No, because work done हमने क्या पढ़ा? Force into displacement. तो ये this one here wrong. So slope तो हमें find नहीं करना. Second year area under the curve. Area under the curve क्या होता है? This into this. Yes. Okay. So here this into this अगर आप find कर रहे हो area under this one curve, then force into displacement we are writing. Then can you write their work done? See your formula. See force displacement. Yes or no? So we can't use their slope, then we will use their second term, area under the curve, force into displacement. So this curve is given, then if you can find their area under this one curve, ये curve इसके नीचे का अगर area find कर दोगे, तो ये area में क्या देगा? आपको work done देगा. So using this one graph, then area under the curve, which curve? AB curve, is equal to our work done. Okay, so here we can write their work done equal to your F dot ds. Clear? And this one equal to area under curve. कोई भी ग्राफ गिवन है, उसके अंदर कोई भी कर्व गिवन है, तो उस कर्व के नीचे का अगर एरिया फाइंड कर दोगे, तो वो एरिया किसके इक्वल होगा? आपका वर्क डन के इक्वल होगा. ओके. Next, here an object is moved a distance by a following variable force as shown in graph. Then what is the work done by the force? अब आपको ग्राफ गिवन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फोर्स इनटू डिस्टेंस ग्राफ. Clear? So here you have to find out their work done. So how we can find their work done? अभी मैंने बताया, अगर आपको ग्राफ गिवन है, फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ अगर आपको गिवन है, तो वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया अंडर द कर्व. जो भी कर्व आपको गिवन है ग्राफ के अंदर, उसके नीचे का अगर एरिया फाइंड कर दोगे, तो वो एरिया किस चीज के इक्वल होगा? आपको वर्क डन के इक्वल होगा. तो आपको कर्व गिवन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके नीचे का कर्व का एरिया क्या होगा? वन इज योर राइट ट्रायंगल and second is your rectangle. Then find their total area of this one, then it will be work done. Area under the curve in FS graph. Okay, force distance graph. Force distance graph के अंदर हम कर्व निकाल रहे हैं. So let here this one your P point, Q
R, this one curve in curve PQR. So work done we can write there, area of triangle plus area of rectangle. This one rectangle given. Here we can write there PQRST. This one triangle here, which one triangle? PQT plus your rectangle given QRST. Right triangle we can write there half, base into height. Right triangle we can write there, here will be plus beta. Then it will be a side into side. So we can write there side square. We can write square note, then it will be right triangle na beta. Side QR into your QT. So 1 by 2, your base will be this one 0 to 8. Then 8 only, height will be this one from 0 to 30. Okay, then it will be 30. Plus your side into side. This one side into your this side. This side equal to 30 only. Into your this one side how much left? 8 here, 12 here, then it will be your 4 only. So solve this one, then it will give us 240 joule. Clear? So I hope you understood beta. Any graph is given in any question, so how we can find graph? अगर given है तो दो ही टर्म मैंने बताया था यूज कर सकते हैं. कहीं भी किसी चीज का ग्राफ गिवन हो तो एक हम स्लोप यूज करते हैं, एक एरिया अंडर द कर्व. स्लोप हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्लोप क्या होता है? रेशियो अलोंग y टू दी x, y के अलोंग x एक्सिस के अलोंग. तो रेशियो तो हमें वर्क डन नहीं देगा. वर्क डन हमें कहां से मिलेगा? जब हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर यूज करेंगे. एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए यूजिंग दिस वन ग्राफ, देन वी हैव टू फाइंड आउट एरिया अंडर दैट कर्व. ओके, सो एरिया अंडर दिस वन कर्व वी कैन राइट देयर, एरिया ऑफ दिस वन कर्व, वन इज योर राइट ट्रायंगल, दिस वन योर रेक्टेंगल. तो दोनों का एरिया हम फाइंड करके यूज करेंगे, देन योर आंसर विल बिकम योर 240 joule. Like this one we can find there. Okay, one. Now see beta, next one, work done by any body on the rough inclined plane. This one how we can find their work done on any plane on the rough inclined plane. हमने लास्ट यूनिट में किया था कि बॉडी अगर क्या कर रही है, इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है, देन हाउ यू कैन फाइंड देयर एक्सेलरेशन. तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन हम यूज कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग सम एंगल थीटा. तो आपको वर्क डन फाइंड करना, अगर बॉडी क्या है रफ इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है, अभी तक क्या बॉडी क्या हॉरिजॉन्टली मूव कर रही थी, देन वर्क डन हाउ वी कैन फाइंड देयर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? फोर्स आपको गिवन होगा, देन इनटू डिस्प्लेसमेंट. अगर वेक्टर की फॉर्म में गिवन है, देन वी विल देयर F डॉट S. क्लियर? ग्राफ गिवन है, देन एरिया अंडर द कर्व give us work done. Now if body is moving on the inclined plane, body is moving on the inclined plane upward direction में, कहाँ जा रही है? upward direction में move कर रही बॉडी, नीचे से ऊपर की तरफ अगर accelerate कर रही है on the rough inclined plane, accelerating in upward direction from here to there. Let we are taking their total displacement from here to there, let S displacement. कहाँ शिफ्ट होगी? इधर से इधर शिफ्ट होगी. तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितना वर्क किया? सो दिस वन वर्क हाउ वी कैन फाइंड देयर, एज वी नो दैट वर्क इक्वल टू योर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब हमें डिस्प्लेसमेंट तो गिवन है, कितना हम लेके चल रहे हैं, एज डिस्प्लेसमेंट इज टेक प्लेस. सो फोर्स वी कैन फाइंड देयर इन दैट केस, देन वर्क डन विल बी कम आउट और नॉट. इसके अंदर अगर हम फोर्स फाइंड कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा. अब फोर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग देयर न्यूटन्स लॉ. फर्स्ट वी हैव टू मेक देयर फोर्स इक्वेशन, देन वी कैन फाइंड देयर वर्क. अब ये मास है, जिसका मास क्या है? लेट हम वी आर टेकिंग देयर m मास. ओके, लेट m मास ऑफ बॉडी accelerating upward direction, upward
at displacement s. ओके कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है? s डिस्प्लेसमेंट कर रही है. So how we can write there? M is mass there, then mg will be vertical downward direction. So another component also we will do. We discussed beta this one term already in last unit. How we can resolve this one? Mg cos theta will be there in this direction here. Mg sin theta will be there, and here will be a R normal reaction, and in this one here friction. Body ऊपर की तरफ जा रही तो friction कहाँ लगेगा? Opposite of the motion. And इधर की तरफ क्या कर रही है? Accelerate कर रही है, force लग रहा है. So we will use there by using their Newton's second law for making equation. By using Newton's second law, then we will make their equation of motion F equal to ma. So total force, how we can write there? This one minus this one. Total we can write there friction plus here mg sin theta. Both are acting in same direction. That's why we are taking there ma only. So friction we can write there as we know friction equal to here mu r. Okay, and r from this one component we can write there r equal to here mg cos theta. R equal to mg cos theta. So your friction will be there mu mg cos theta. Clear? So put value up here. Then mg, m may better write as it is because need of the force only here. F plus mg sin theta इक्वल टू यार फोर्स ओनली. फोर्स ही निकालना है वर्क के लिए तो हमें. सो फोर्स फ्रिक्शन वी कैन राइट देयर म्यू आर प्लस यर एम जी साइन थीटा प्लस यर फोर्स. आर एम जी कोस थीटा म्यू एम जी कोस थीटा. दिस वन इक्वेशन बेटा ऑलरेडी वी डिस्कस्ड इन योर लास्ट यूनिट्स. इक्वल टू दिस वन. ओके, इक्वल फोर्स. दिस वन विल बी इक्वल नॉट प्लस. So force will be equal to this one. Force equation we can write there mg we can take outside mu cos theta plus here sin theta. क्या आ गया? ये फोर्स आ गया. हम क्या फाइंड कर रहे थे? नाउ वर्क डन ही फाइंड कर रहे थे. वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स वी कैन राइट देयर mg mu cos theta plus here sin theta. And S is displacement already given in our question कि यहाँ से वहां तक डिस्प्लेस करा था रफ सरफेस के ऊपर की तरफ. So here we can write there S only. So this one our work done when any body is moving along on the rough inclined plane in upward direction like this one. Okay, work done when body is moving in upward rough inclined plane. I hope you understood beta different way of that to find the work done. Okay, in next class we will discuss when body will be accelerated in downward direction with the s displacement. So how we can find their work done. Okay, then our next topic will be start of the energy. So thank you for watching our video today.